All of you mute your mic. Let us start the session. Today we are going to start new chapter number 13, surface areas and volumes. And today we are going to start session number 1. And let us revise all the formulas which we have already studied in class 9. So let us start with the first, solid. What is solid? Solid is the objects having definite shape and size. Okay, whatever the objects with those having definite shape and size, those objects are called solids. And solid occupies a definite space. Okay, and there are different types of solids we have studied in last year. Three-dimensional shape solid. जिसमें से first solid था cuboid. So let us start with the first shape, cuboid. Cuboid, solids like matchbox, chalk box, or a tile, book, almirah, room, etc. These are all in the shape of cuboid. And let us see the shape of cuboid. So this is L, this is L, this is breadth, and this is H. यहाँ पे केवल 3 पैरामीटर है L, B, H. Now let us recapitulate one by one. So we'll start with the lateral surface area of the cuboid. Anish, what is the lateral surface area of cuboid? सर मैं बोलूं? हाँ बोलो, चलो. LB into BH into HL. LB into no. Sir, can I? Okay. Sir, can I? Sir, 2 into LB plus LH plus BH. No, wrong. 2 into L plus B into H. चलो प्रियांशी तुम बताओ. 2 into LB plus BH plus HL. No, wrong answer. Sir, 2 into L plus BH. Very good. 2 into L plus B into H. I am asking lateral surface area, not the total surface area. Okay. So lateral surface area means area of 4 walls. So उसका formula क्या है? Perimeter of the base into height. Now what is the perimeter of the base? 2 into L plus B into H. Okay. So let us start with the first lateral surface area, that is 2 into L plus B into H, perimeter of the base into height, in other words. Not total surface area, and whatever the formula you are telling just now, that is the formula for total surface area, 2 into LB plus BH plus HL. Okay, yeah, LH. Any doubt here? No, sir. Okay. Now the third formula, volume. What is the volume of cuboid? L into B into L. Right, very good. L into B into H. And the unit of volume is cubic units. Now let us move towards the another type of solid, cube. Next है cube. अच्छा, उससे पहले the diagonal of cuboid is given by this formula, root over L square plus B square plus H square. This is the formula for diagonal of cuboid. Next, cube. Solids like ice cubes, sugar cubes, dice, etc. are in the shape of cube. Okay, so this is the diagram, and the length of each edge is denoted by letter A. And for a cube having each edge is equals to A units, we have number 1 formula, lateral surface area. So what is the formula for lateral surface area of cube? 4A square. 4A square. Right, 4A square units. Next, total surface area. 6A square. Very good, 6A square units. What is the volume of cube? A cube. Right, A cube cubic units. Okay, and what is the diagonal of cube? A square root over A square plus A square plus A square. That means A root 3. Okay, A root 3 is the diagonal of cube. Any doubt here?
नेक्स्ट फिगर है सिलेंडर. ओके, सॉलिड्स लाइक मेजरिंग जार्स, circular pillars, circular pencils, circular pipes, road rollers, gas cylinders, etc. are said to have a cylindrical shape. Now see the cylindrical shape. Here two parameters are there. One is radius and another is height. Okay. Now let us have a look in the formula of all the formula related with this cylinder. Number one, क्योंकि यहाँ पे जो lateral surface area है that is circular surface, that is why the lateral surface area we used to say that curved surface area. So what is the formula of curved surface area? 2 pi r. 2 pi RH. Right, 2 pi RH square units. And what is the total surface area? 2 pi r. Okay, 2 pi r into r plus h. So total surface area हम लोग कैसे निकालेंगे? CSA plus area of top A plus area of bottom, pi r square plus pi r square, that is 2 pi r square, and we'll take 2 pi r common, so we'll get h plus r or r plus h. Okay, now what is the volume of cylinder? Pi r square H. Right, pi r square h. So volume को हम लोग दूसरे तरीके से भी यहाँ पे बोल सकते हैं, area of base into height. What is the area of base? Pi r square. Pi r square. Into height, that is h. So we'll get pi r square h. Next, hollow cylinder. Hollow cylinder means all of you have seen iron pipes, rubber tubes. Have you seen or not? So these are the example example of solids which are in the shape of hollow cylinder. Okay, see this figure. यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये hollow है, मतलब खोखला है. Okay, खाली पार्ट है ये. So let the radius of the outer cylinder is capital R and the radius of inner cylinder is small r. So यहाँ पे दो फार्मूला है. सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर, इट्स वेरी इजी. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इंटरनल सिलेंडर. सो बाहर वाला का कर्व्ड सरफेस क्या होगा? CSA 2 pi capital R H. Right, what is the CS कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द इंटरनल सरफेस एरिया? 2 pi small Right, 2 pi capital RH plus 2 pi small rh. So इसमें हम लोग we can take common 2 pi h. 2 pi h we can take common. So we'll get 2 pi h into capital R plus small r. So this is the formula to find the curved surface area of hollow cylinder. अगर hollow cylinder का formula याद भी नहीं है तो अपन डायरेक्ट ये formula वहाँ पे लिख के डायरेक्ट कर सकते हैं. Okay, fine. Now next is total surface area. What is the total surface area? How will you find? Curved surface area plus area of bottom or top. और जो bottom और जो top है, that is in the form of ring. What is the area of ring? R square Pi into capital R square plus small r square. ठीक है. Now think about how will you find the volume? Pi capital R square into h minus pi small r square into h. Okay, very good. Volume of outer cylinder minus volume of internal cylinder. Okay, so first we'll find the volume only. External volume minus internal volume. So pi capital R square h minus pi small r square h. और दोनों में pi h common है. So we can take pi h common and we'll get pi h capital R square minus small r square cubic units. Any doubt? No, sir. Okay. Now we'll move towards total surface area. टोटल सरफेस एरिया मैंने बताया था कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस एंड टॉप, बोथ एरिया ऑफ बेस रिंग्स.
सो दो टोक है ऊपर और नीचे. So curved surface area we already got 2 pi h into capital R plus small r, and area of base is 2 pi into capital R square minus small r square. So this is the formula for calculating total surface area of hollow cylinder. Now we'll move towards cone. Cone, solids like ice cream cones, conical tent, funnels, etc. are having the shape of cone. So see this diagram. यहाँ पे तीन पैरामीटर है. One is radius, another is slant height L, और दूसरा है H height. Okay, and because this is right angle, so the relation between these three we can have by using Pythagoras theorem, that is L square is equals to R square plus H square. Okay, so consider a cone in which base radius is R, height is H, and slant height is L, that is equals to root over R square plus H square. Now what is the CSA of this cone? Pi R. Yes, pi R into L, and L is root over R square plus H square. Okay, unit is a square unit. Now what is the total surface area of the cone? Pi R into L plus R. Okay, so how will you find the total surface area? Curved surface area plus area of base. Curved surface area plus area of base, and area of base is in the form of circle. So pi r L plus pi r square. Now we'll take pi r common. So we'll get pi r into L plus R square units. What is the volume of cone? 1 by 3 pi R square. Right, 1 by 3 pi r square h cubic units. Now we'll move towards next figure, sphere. Sphere का example है football. Objects like football, cricket ball, or tennis ball, etc. are said to have the shape of sphere. See this example. इसमें एक ही parameter है radius, that is r. So for a sphere of radius r, what is the curved surface area of the sphere? 4 pi r square. Okay, 4 pi r square. Very good. What is the total surface area of sphere? 4 pi r square. Okay, very good. Sphere में curved surface area और total surface area दोनों same होता है. Okay, so that is why I wrote here surface area of the sphere. Surface area means total surface area only, and curved surface area is also equals to 4 pi r square. And what is the formula for volume? 4 by 3 pi R cube. 4 by 3 pi R cube. Yes, 4 by 3 pi r cube. So these are two formulas for sphere. Now we'll move towards hemisphere, the last shape of the surface areas and volumes. Last year, these are our formula belongs to last year only. Class 9 का रिविजन कर रहे हैं. ये लास्ट फिगर था जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे. सो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ स्फीयर. अगर स्फीयर को हम लोग सेंटर से हाफ कट करते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है. ईच पार्ट इज कॉल्ड हेमिस्फीयर. ओके, सो दिस इज द वन पार्ट ऑफ द स्फीयर विच वी कट it into two equal parts, right? And only here also only one parameter, that is r, is there. Now what is the curved surface area of hemisphere? 2 pi R. Right, 2 pi r square. अगर हम लोग इसको कट करते हैं तो यहाँ पर भी एक सर्कल बन जाएगा. Here also one circle will get. So what is the total surface area of hemisphere? 2 pi R square. 2 pi r 3 pi R. 3 pi r square. Right, very good. Now what is the volume of this hemisphere? 2 by 3 pi r cube. The half of the volume of sphere. Sphere का 4 by 3 pi r cube है. So इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 by 3 pi r cube. Cubic units. Okay. So now we are going to start the class 10th syllabus. Types of questions. So there are three types of question. The first question is combination of solids based question. Combination of solids based question. And the second type is conversion based questions. And the third type is frustum of cone based question, जो कि इस साल के लिए delete हो गया. This part is deleted for this academic year.
लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत कर लेंगे, ओके, just for understanding only. Now in combination we have two types of questions. One is surface areas of combination of solids, second is volumes of combination of solids. So हम लोग का जो चैप्टर में 4 एक्सरसाइज है. फर्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन surface areas of combination of solids. Second exercise is based on volumes of combination of solids, and the third exercise is based on conversion based question, and the fourth exercise is based on frustum of cone, जो कि इस साल के लिए डिलीट हो गया. So any doubt in this type of questions? Slide. No, sir. Now we are going to start this part. Okay, examples from daily life of combination of solids. So let us have the first example, capsule. Have you seen capsule? Yes, sir. So capsule में ध्यान से देखो, यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है ये हेमिस्फीयर है, and this part is also hemisphere, and the middle part is cylinder. अगर इसको मैं स्प्लिट करूं तो कुछ ऐसा मिलेगा, समझ में आया? सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सॉलिड्स. कौन कौन से? 2 हेमिस्फीयर एंड 1 सिलेंडर. क्लियर है? Yes, sir. Okay, so now we'll move towards the another example, tent. See, tent में ये वाला जो पार्ट है, this part is conical form, ये conical form है, और ये जो पार्ट है जो the lower part is in cylindrical form. So this is the combination of 2 solids. One is cylinder and another is cone. We'll see one more example. आइसक्रीम देखे हो कभी? क्यों आनस? देखे सर, खाए भी सर. ओके, तो अभी खाने का मन तो नहीं कर रहा है ना? नहीं सर. ओके, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स. ध्यान से देखो, ऊपर एक हेमिस्फीयर है और एक नीचे कॉन है. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी सॉलिड्स? 2 solids. One is cone and another is hemisphere. चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक टॉय का एग्जांपल ले लेते हैं. So can you identify this is the combination of how many solids? 2. Name them. Cone and hemisphere. Right. एक कोन है और दूसरा हेमिस्फीयर है. चलो एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग. एक वेजल ले रहा हूं मैं. दिस इज अ ग्लास वेजल और इसमें जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द ग्लास वेजल इज 13 सेंटीमीटर. Now you identify whether this is how many solids are there. This is the combination of how many solids? 2 solids. 2 solids. Identify. Cylinder and Hemisphere. Right, very good. Cylinder and hemisphere. ये ऊपर वाला पार्ट जो है, this is cylindrical part and the lower part is hemispherical part. Any doubt in these examples? No, sir. Okay. Now we are moving towards the first exercise, surface, which belongs to surface area of a combination of solids. So we'll start with the first question. 2 cubes, each of volume 64 centimeter cube. This is in centimeter cube. Okay. यहाँ 3 छोटा से आ गया. 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड. अगर 2 क्यूब को जॉइंट करेंगे हम लोग, सो रिजल्टेंट सॉलिड क्या होगा? Cuboid. ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड. सो दिस इज द क्यूब. ओके, लेट द साइड ऑफ द क्यूब इज x सेंटीमीटर. नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम इज गिवन? क्यूब का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 64 राइट, 64 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब? A cube. राइट.
So volume of cube is given 64 centimeter cube. So यहाँ पर साइड हम लोग यहाँ पे x लिए, so volume will be x cube is equals to 64 and x will be cube root of 64. What is the cube root of 64? 4 centimeter. 4, right? 4 centimeter. So we got the value of each side. Okay. अभी ध्यान से देखो, साइड ऑफ क्यूब हम लोग का निकल गया. अभी मैं एक और क्यूब इसमें ज्वाइंट करूंगा. And we know that when two cubes are joined end to end, we'll get cuboid. See carefully. देखो एक क्यूब यहाँ पे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ. So हम लोग को अभी एक क्यूबॉइड मिल गया है. And what is the length of cuboid? Length 8 centimeters. 2x, right? 2x. So length of cuboid L is equals to 2x, that is 2 into 4, 8 centimeter. And what is the breadth? This is the breadth. Breadth is 4. And what is the height? Height is also 4 centimeter. Now what we have to find? Surface area of the resulting solid. अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं है, केवल सरफेस एरिया लिखा है, that means you have to find the total surface area. Is that clear? Only surface area if it is mentioned, total surface area you have to find. Okay. Now what is the formula of surface area of the cuboid? 2 into LB plus BH plus HL. Now we'll substitute all the values. The value of L is 8, the value of B is 4, H is also 4, then we'll substitute. This will become 32 plus 16 plus 32. So what is the total? 80. Right. 80. 2 into 80, final answer is 160 centimeter 160. square. Any doubt in this first question? No, sir. Okay. So now we'll move towards the second question. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total length of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. See this figure. ये पूरा hollow है, मतलब इसमें पानी हम लोग भर सकते हैं. Solid नहीं है, पूरा solid नहीं है ये. This is hollow. Okay. और यहाँ पे ये वाला खाली पार्ट है. This is the empty part. Otherwise यहाँ पे पानी नहीं भरेगा. ये वाला पार्ट. समझ में आ रहा है कि नहीं? So यहाँ पे empty part कौन कौन सा है? ये वाला empty part है. This is also empty part. So अगर हम लोग बोल रहे हैं inner surface area निकालना है, तो that means we have to find the curved surface area of cylinder and curved surface area of hemisphere. Whether this is clear? Yes, sir. Okay. और हम लोग को ये दोनों ऐड करना है. We have to add these two, curved surface area of cylinder and hemisphere. अब कभी भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों अलग अलग सॉल्व नहीं करना है. पहले दोनों का फॉर्मूला एक साथ लिखना है, उसके बाद कॉमन निकालेंगे. आई विल शो यू. लेट अस स्टार्ट विद द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर. द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज गिवन 14. सो डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज ऑल्सो 14 सेंटीमीटर. सो दोनों का जो रेडियस है हम लोग कॉमन ले लेंगे r. दैट इज 14/2, 7 सेंटीमीटर. नाउ टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर. तो यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ऊपर वाला हाइट कितना होगा? ये वाला 6. राइट. अभी सभी पैरामीटर मिल गया. अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल्स टू इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. वही कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. 2 pi r square plus 2 pi r h. सो इसमें मैंने कहा था कि अभी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट डोंट सॉल्व सेपरेटली. एक साथ लिखो. यू राइट टुगेदर एंड टेक व्हाटएवर द कॉमन इज देयर. सो व्हाट इज द कॉमन बिटवीन दिस टू टर्म?
2 pi r. Right. We'll take 2 pi r common. After that only we will substitute. So 2 into 22 by 7 into 7 into 6 plus 7. तो इसमें 7 7 cancel हो गया and we'll get 44 into 13. So 44 into 13 if you multiply you will get 572 centimeter square. So hence the inner surface area of the vessel is equals to 572 centimeter square. So this is question number 6. Any doubt here? No, sir. Okay. Now question number 3. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere. Hemisphere के ऊपर cone बना हुआ है of the same radius and the total height of the toy is given 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. So this is the figure. Hemisphere के ऊपर cone बना हुआ है. Okay. और ये वाला जो पार्ट है ये अंदर का पार्ट है. This is the inside part. We cannot touch. Surface area means what is the, how will you identify whether it is a surface area or not? The part, the area where we can touch. So whether you can touch this part? No, sir. So that is why this will not included. This part is not included. Okay. केवल curved surface area of hemisphere रहेगा और curved surface area of cone रहेगा. Okay. Now see total height is 15.5. और यहाँ से यहाँ तक 3.5 है. So height of cone कितना होगा? 15.5 minus 3.5. Okay, that is 12 centimeter. So first radius of cone is equals to radius of hemisphere, and this is equals to 3.5 centimeter. Okay, and total height is given 15.5 centimeter. So height of the cone will be 15.5 minus 3.5. That is 12 centimeter. Okay, and just now I told you that the total surface area will be equals to curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere. Cone के लिए curved surface area में हम लोग को slant height चाहिए, L चाहिए. L is not given in the question, so we'll find slant height. The formula is square root of r square plus h square. That is 3.5 whole square plus 12 square. The square of 3.5 is 12.25 plus 144. 156.25 इसका square root होगा 12.5 centimeter. Now we got the value of L. अब एक साथ लिखेंगे total surface area of the toy is equals to CSA of hemisphere plus CSA of cone. What is the CSA of hemisphere? 2 pi r square. Why? Yes, Right, sir. right, very good. CSA of cone? RL. Pi rl. Pi RL. So we'll substitute. Now, just now I told you that after writing the formula, what you have to do? Common difference. Yes, common निकालना है इसमें. क्या क्या common है यहाँ पे? Pi r. Right, we'll take pi r common. After taking common only you have to substitute. So 22 by 7 into 3.5 into 2 into 3.5 plus 12.5. Okay, तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 0.5 से, and 22 into 0.5 is 11. 7 plus 12.5 is 19.5. नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा. सो फाइनल आंसर इज 1. ये थोड़ा लंबा हो गया, मैं जो बोल रहा था वो ज़्यादा इजी है. इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 0.5 आ रहा है, and if you multiply these two you'll get 11. 11 into 19.5 you can do directly. 214.5 centimeter square. Hence the surface area of the toy is equals to 214.5 centimeter square. Any doubt in this question? No, sir. Okay, now we'll move towards question number 4. Now this is very important for this year. A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. Cubical cube के ऊपर hemisphere रखा हुआ है. See this figure. ये cube है और cube के ऊपर hemisphere रखा हुआ है.
और ये जो टॉप व्यू है हम लोग का ऐसा दिखेगा, देखो ABCD, whether you are able to understand, this is the top view. टॉप व्यू समझ में आ रहा है? Yes, sir. यहाँ पे क्या है? What is there here? यहाँ पे क्या है? What is here? Circle. सर्कल नहीं है, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर। ओके, यहाँ पे हेमिस्फीयर है। अभी ध्यान से देखो, हम लोग का क्यूब में टोटल 5 सरफेस एरिया है जो डिस्टर्ब नहीं हुआ है। कौन सा पार्ट डिस्टर्ब हुआ है? द टॉप पार्ट। ओके, और टॉप पार्ट में ये वाला पार्ट नहीं है क्यूब में। व्हाट इज दिस? पाई आर स्क्वायर। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में ये वाला पार्ट माइनस करेंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर, बेस ऑफ एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। और एक पार्ट और ऐड हुआ इसमें, कौन सा पार्ट? ये वाला। व्हाट इज दिस? Hemisphere. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 pi r square. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ध्यान से देखो, जो मैं बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर? Yes, sir. अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? Yes, sir. व्हाट? ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द डायमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, एंड दिस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। चलो अभी हम लोग इसका राइट अप स्टार्ट कर रहे हैं। हियर द साइड ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। Diameter of the hemisphere is equals to side of cubical box, and that is equals to 7 centimeter. Okay, so 2r is equals to 7, and what is the value of r? 7 by 2. 7 by 2. तो अभी जो मैं बोल रहा था वो यही वाला है। देखो, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होगा? 6a square. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर? Pi r square. एंड व्हाट इज द CSA ऑफ हेमिस्फीयर? 2 pi r square. ओके, विल सब्स्टिट्यूट। नाउ अगेन सिंप्लीफाई। ये दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। Now there is no common, so what we will do? We will substitute the values. What is a? 7. And what is r? 7 by 2. Pi is 22 by 7. So we'll substitute all the values. Okay. So 7 square it will become 49, और ये 7 by 2 दो बार लिखेंगे, जिसमें एक 7 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं और ये भी कैंसिल कर सकते हैं। So 77 by 2 आ जाएगा। Okay, so 294 plus 77 by 2, and 77 if you divide it by 2, what you will get? 38.5. So 294 plus 38.5, final 332.5 centimeter square. Hence the total surface area of the solid, not toy, this is not a toy, नहीं दिया हुआ, solid. Total surface area of the solid is equals to 332.5 centimeter square, and the greatest diameter is equals to 7 centimeter. Any doubt in this question? No, sir. ठीक है, अभी फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है, ध्यान से देखो। फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग ऊपर हेमिस्फीयर रखे हैं। ओके, हेमिस्फीयर हम लोग ऊपर रखे हैं। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हेमिस्फीयर का डिप्रेशन कट कर रहे हैं। A hemispherical depression is cut out from one phase of a cubical wooden block. ऊपर से कट कर दिए।
तो हम लोग को कुछ ऐसा मिलेगा। देखो ये हम लोग यहाँ से यहाँ तक कट करके निकाल दिए, ये समझ में आ रहा है? सो ऊपर का जो व्यू है वो सेम वही मिलेगा जो हम लोग को पिछले क्वेश्चन में मिला था। क्लियर है? और यहाँ पर भी उतना ही सरफेस बन रहा है जो पिछले क्वेश्चन में बना था। कैसे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से ये वाला माइनस कर दो, प्लस ये वाला डिप्रेशन भी एक तो बनेगा हम लोग के पास, जिसको हम लोग छू सकते हैं, मीन्स दैट विल काउंट एज ए सरफेस एरिया. So that is nothing but that is CSA of hemisphere. So we'll start with the diameter of the hemisphere is equals to edge of the cube and the edge of the cube is L. So R will be L by 2 and we'll write the formula. Whether this is clear all of you? Same formula. 6L square, वहाँ पे A था, यहाँ पे L दिया हुआ, इसलिए 6L square minus pi r square plus 2 pi r square, and this together will get pi r square. Now substitute the value of pi and r. एक मिनट, पीछे जो टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है that is given in the form of L and pi only. So I am not going to substitute the value of pi here. So ये L by 2 substitute कर दिए. अभी दोनों में से हम लोग L square by 4 कॉमन लेंगे. सो यहाँ पे 24 बचेगा और यहाँ पे पाई. सो फाइनल आंसर इज L स्क्वायर बाई 4 इंटू पाई प्लस 24 स्क्वायर यूनिट्स. सो दिस इज द आंसर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. एनी डाउट? No, sir. Now last question, we are moving towards the last question of today's session, that is 6th question. Medicine capsule. Medicine capsule is in the shape of cylinder. ऑलरेडी मैं जो एग्जांपल दिया था बताया था, यहाँ पे एक सिलेंडर मिलेगा, ये वाला बीच वाला एक सिलेंडर और ये दोनों हेमिस्फीयर. These two are hemisphere. Okay, stuck with 2 hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is given 44 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. So we'll start with the diameter. Diameter of the capsule is equals to diameter of the hemisphere, diameter of the cylinder also, okay, and both are equals to 5 millimeter. So what is the radius then? 2.5. Yes, write it as 5 by 2 only, 5 by 2 millimeter. Okay, अभी हम लोग को इसमें सरफेस एरिया निकालना है. सो थोड़ा सा मैं फिगर चेंज करूंगा अभी मैं. The length of the entire capsule is 14 millimeter. यहाँ से यहाँ तक R है, here, and up to here also it is R. So 14 में से 2R minus करना है. 2R मतलब 5. So what is the length of cylindrical part? 9 millimeter. Yes, 9 9 millimeter. So length of the cylindrical part is equals to 14 minus 5 by 2 plus 5 by 2 will become 5. So 14 minus 5 is equals to 9 millimeter. Okay, see this figure. Now this part you can't touch. This part also you can't touch because these two parts are the interior part. हम लोग छू नहीं सकते. So इसका जो surface होगा वो होगा surface area of CSA of hemisphere, CSA of 2 hemisphere plus CSA of cylinder. तो surface area of capsule is equals to CSA of cylinder plus 2 times CSA of hemisphere. What is the formula of CSA of cylinder? 2 pi RH. 2 pi RH. Very good. What is the formula of CSA of hemisphere? 2 pi R square. Okay, we'll substitute. 2 pi r And square. after that you have to take common. What common you can take? 2 pi R. 2 pi r. 2 pi r अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो h plus 2r. मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे दोनों को सेपरेट सॉल्व करके बाद में ऐड करते हैं, उससे क्या होता है कि राउंड फिगर आंसर नहीं आता है. सो यहाँ पे देख लो. नाउ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज. 2 into 22 by 7 into 5 by 2
into 9 plus 2 into 5 by 2. What is 9 plus 5? 14. 14. ठीक है, 40. यहाँ पे हम लोग को 22/7 into 5 into 14 मिल गया, तो ये डायरेक्ट हम लोग का 7 से कैंसिल हो गया. So we got 220 millimeter square. So this is the required surface area of the medicine capsule. अब यहाँ पे अगर हम लोग सेपरेट सॉल्व करेंगे तो दोनों डेसिमल में मिलेगा. This part also in decimal, this part also in decimal. So you will never get the round figure. You will get somewhere around 219 point something. So that is why I always suggest that कि पहले फॉर्मूला लिखो, उसके बाद कॉमन निकालो, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करो. Is that clear to all of you? Yes, sir. Okay. So this is the last question of today's session. Now we'll move towards assignment questions. Only 4 questions are there. You have to complete all these questions. Okay. So that's all for today's session. Thank you. Thank you very much.